Today we discuss about the bank and financial sector. Everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we have an exciting episode lined up for you as we dive into the fascinating world of bank and financial sector. Whether you are a student, an entrepreneur, or simply curious about the money walk, this video will be provide valuable insight into the key concept and practice in the industry. So let's get started. What is the bank and financial sector? Before we delve into detail, let's begin by understand what a bank and financial sector actually refer to. The bank and financial sector encompass various instruments such as commercial bank, investment bank, credit opinion, insurance company, and more. These institutes play a virtual role of managing money, provide financial service, or supporting economic growth. Type of financial institution. Now today we know the broader scope of sector. Let's take a closer look at the different type of financial institution and service. Commercial bank. Commercial banks are the most recognized type of financial institutions. They accept deposit from the individual and business and provide various services like saving account, check account, loan, and credit card. They also facilitating money transfer and currency exchange. Investment bank. Unlike commercial bank, investment bank primarily deal with the large corporation, government, and institution client. They assist the rising capital through rising stock and bond, provide advisory service for merger and acquisition, and engage in trading and underwriting activities. So banking and financial service. Now that we have a basic understanding of type of financial institution, let's explore some common banking and financial service that are available to individual and business. Deposit and loan credit. Deposit accounts such as saving account and checking account allow individual to surely store their money in the bank on interest and easily access the fund. Bank provide loan and credit to individual business, help finance various needs such buying home, start business. So that wrap up our overview of the bank and financial sector. We have explored different type of financial institution, discussed common banking and financial service, and touch upon some emergency trend and challenge. Remember, financial literacy is valuable asset in today. So keep explore the learning. So guys, if you don't have a demat account, then go to the description. I put the link and open your demat with Angel One. सो गाइस चलिए देखते हैं एंजल वन पे ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं. दिख रहा होगा ऊपर सर्च बार, हमें सर्च बार पर क्लिक करनी है. एक इंटरफेस खुला जहाँ पे हमें अपने स्टॉक को सर्च कर लेना है. सो मैंने बैंक निफ्टी सर्च किया है और बैंक निफ्टी खोलते ही हमें एक इंटरफेस खुला जहाँ पे हमें उसकी प्राइस लिस्ट हमें सब कुछ दिख रहा होगा और नीचे में दिख रहा है हमें एक बाइंग का ऑप्शन. सो हमें बाइंग करनी है. सो हम बाइंग पे क्लिक करेंगे और देन एक इंटरफेस खुला जहाँ पे हमें कैरी फॉरवर्ड इंट्राडे दिख रहा है. कैरी फॉरवर्ड वो होता है जब हम एक स्टॉक को एक से ज़्यादा दिन तक रखते हैं और इंट्राडे आज खरीदे आज ही बेच दिए. ठीक. देन हमें दिख रहा है लॉट साइज. लॉट साइज वो होता है एक स्टॉक का साइज जितना हम स्टॉक बाइंग करना चाहते हैं. ओके. देन हम देख रहे हैं लिमिट एंड मार्केट प्राइस. लिमिट होता है जब भी एक स्टॉक की एक लिमिट प्राइस पे खरीदते हैं. ठीक है. और मार्केट प्राइस, जैसे मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसी पे ले लेंगे. ठीक है. और लिमिट में हम अपने स्पेसिफिक प्राइस पे डील करेंगे. ओके. देन हमें अभी बाइंग करनी है तो पहले हम अपनी लॉट साइज डाल देंगे. ठीक. हमें प्राइस दिख रहा है. देन इसे बाइंग पे क्लिक करेंगे और इसे हम कंफर्म करेंगे. Okay, thank you so much.